हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हम सबके चाहिए संजय कपूर। संजय, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो नया पार्ट 2 का जो ट्रेलर देखा काफ़ी डिफरेंट है। लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे इसका। बिल्कुल। लेकिन आपसे जानना चाहूँगा फीडबैक्स एंड रिएक्शंस कैसे रहे? फीडबैक और रिएक्शन बहुत ज़बरदस्त रहे हैं। इनफैक्ट मैंने जब खुद ट्रेलर देखा मुझे बहुत पसंद आया। मैंने रिलीज़ जब ऑडियंस के सामने के पहले अभिषेक जो डायरेक्टर हैं उसने उन्हें बताया था, एंड आई वाज रियली रियली हैप्पी बिकॉज ट्रेलर में ऑलरेडी सीज़न 1 तो लोग देख चुके थे, और लोगों को जैसे है कि दे वर वेटिंग फॉर द सीज़न 2 बिकॉज सब जानते थे कि जैसे सीज़न 1 ख़त्म हुआ था कि सीज़न 2 ज़रूर आएगा। एंड ट्रेलर देखने के बाद तो डेफिनेटली सबको यही लग रहा है कि इट्स लिविंग अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ सीज़न 1। तो सीज़न 1 से शुरुआत करें, ये उस वक्त आया था जब कोविड जस्ट हुआ ही था। वन ऑफ द फर्स्ट वन टू इवन टैकल द द डिजीज। वहाँ पे दिखाया गया था। आप, आई थिंक यू गाइस वर द ओनली वन जिन्होंने प्रॉपरली जो शो का प्रॉपर, या लोगों ने किया 10 मिनट 12 मिनट की शॉर्ट जी फिल्म बनाई, बट वी डिड अ फुल थ्रिलर विद दिस ट्रेलर, थिंग द एज अ वे यू बैकड्रॉप। गाइस शॉट, प्लस आपने उसको पूरा प्रॉपर हैपनिंग्स लिए थे जो दिखाए थे इतना डिटेल में। कैसा था उस वक्त जब वो देखा था तभी? क्योंकि लोग, आई गेस सभी लोग उससे कनेक्ट करते होंगे। No, it was very interesting. The shoot procedure was very exciting. लोग बोलते हैं कि यार बहुत साल काम करने के बाद 25-26 साल मुझे हो गए थे उस वक्त काम करते हुए, तो ऐसा लगता है कि अब क्या नया हो सकता है। अब तो जी मतलब फॉर मी आफ्टर वर्किंग फॉर सो लॉन्ग टू शूट ऑन आईफोन, घर पे थे, ना एक्टर से मिले ना डायरेक्टर से मिले। डायरेक्टर से आईपैड में बात करते थे, एक्टर सामने होता नहीं था, सिर्फ रीडिंग के वक्त एक्टर को देखता था मैं। आईपैड में देखता था, डायरेक्टर ही होता था जो बीवी का भी लाइन देता था और बेटी का भी देता था। तो आई हैड टू नो इवन द लाइन्स ऑफ माई फैमिली टू नो कि बीवी बात कर रही है या बेटी बात कर रही है, तो उस हिसाब से मैं लुक दूँ। तो इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एवरीथिंग, बट येस वी हैड अ ग्रेट कास्ट, एंड द वे एवरीबडी परफॉर्म वॉज वेरी वेरी फैंटास्टिक बिकॉज इट डिडंट फील के बिना एक्टरों के हमने शूट किया है, बिना डायरेक्टर के प्रेजेंट होने के बावजूद हमने शूट किया है। और जैसे निकलने उस वक्त डायरेक्ट एडिट किया उसको, और जैसे आया तो इवन इट टुक मी बाय सरप्राइज, वाओ दिस इज वंडरफुल। एंड नाउ द सीजन 2 इज इवन मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज नाउ वी आर गेटिंग अ चांस टू बी विथ ईच अदर। करेक्ट। अब तो एक्टर साथ में है, तो ऑब्वियसली अब परफॉर्मेंस की लेवल और बढ़ गया है बिकॉज इट्स when the actors are together, obviously the performance is always, because acting is nothing but reactions and everything. And today we work together. We though Nikhil unfortunately was busy, but we were very fortunate to get Abhishek, who got in, who really got in, like with all his heart. That he's done a tremendous job, and while working I enjoyed myself with him. एंड व्हेन आई एम सीइंग द ट्रेलर एंड विद द अभी वो छोटे छोटे हाँ, सीन्स जो एड स्निपेट्स। स्निपेट्स जो दे रहा है, देख के ऐसा लग रहा है वाह यार अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ है, क्योंकि हमने भी देखा नहीं है शो। करेक्ट। 7 जुलाई को हम भी देखेंगे। लेकिन संजय, जब वो जो उस दौर में जब आया था तभी बहुत सारे शोज आए थे, लोग घर पे बैठे थे देख रहे थे, बट दिस इज द ओनली शो जिसको इतना प्यार मिला। कभी आपने सोचा था कि इस तरह का शो मतलब पॉपुलर हो जाएगा? इट स्टार्टेड ऑन अ वेरी स्मॉल बेसिस, लेकिन बाद में लोग देखते गए, विद अगेन वुड ग्रोइंग, पीपल स्टार्टेड स्टार्टेड, या नो, ऑब्वियसली सी वेदर इट इज़ गॉन गेम और आप कुछ भी करते हो, आप अपना 100% करते हो। आप चाहते हो कि बहुत बहुत चले और एवरीथिंग, बट यू आर राइट, गॉन उस वक्त, क्योंकि ये इस कदर का शो था तो एक इनसिक्योरिटी डेफिनेटली थी कि वो लोग ये कैसे एडिट होके कैसे आएगा। करेक्ट। एज एन इतनी फिल्में, इतना टाइम काम करने के बावजूद मुझे भी नहीं लग रहा था कि ये वो फाइनली कैसे आएगा। जब सीन कर रहे थे इंटरेस्टिंग तो लग रहा था, स्क्रिप्ट भी इंटरेस्टिंग लग रहा था, क्योंकि हमने अलग अलग शूट किया था तो पता नहीं था कैसे होगा। बट व्हेन आई सॉ इट आई लव्ड इट, द वे द डायरेक्टर यूज्ड द म्यूजिक आल्सो, एंड व्हेन आई मेट द ऑडियंस, व्हेन आई यूज्ड टू टॉक टू देम, जिन्होंने भी लोग देखा, जैसे आप कह रहे थे वुड वाज आल्सो ग्रोइंग दैट टाइम। करेक्ट। It's grown a lot in the last 2 years, but at that time Woot was also growing, so a lot of people wanted to watch even internationally because they had heard it, and they heard through Instagram and social media and everything, but they couldn't watch it because it was not available everywhere. And I sent them the links, and the reaction was unanimous. Everybody just not like the effect of कि हमने ये ऐसे shoot किया, but as a show people loved it. Yeah. So that was, it was creditable, and honestly
you really want all your shows to, but but even I didn't imagine that it would be so well loved and received by the audience. सीजन 1 में हमने देखा कि आपका जो कैरेक्टर था थोड़ा सा रसिया किस्म का भी था, थोड़ा सा मस्ती कर रहा है, मस्ती थोड़े भी से था, ये भी कर उसमें रहा है, ग्रेनेस भी थी। बट तो लॉकडाउन में कुछ इस तरह की मस्ती हुई या समथिंग? नहीं, the thing that time it was basically got a lot of time. As it is, I'm a person who spends a lot of time with family, be it holidays, be it home. If I'm not shooting or anything, I'm not a person to be out every day or something. I like to be at home, have my dinner early by 8:39, watch a film or watch some show or something. So it was only difference is that when the lockdown was not there, you shoot for like 30-40 days or 50 days and then you get time. Here you got those 5-6 months that you were constantly at home. मतलब वो जिम जाने का भी टाइम नहीं था, वो घर पे ही एक्सरसाइज हो रही थी. बट आई न्यू कि दिस इज अ फेज, दिस टू शैल पास, एंड यस, सो इट वाज इंटरेस्टिंग. ऐसा इसी बहाने बीवी के हाथ का खाना, उसने बहुत कॉन्टिनेंटल खाना बनाया, बिकॉज शी वाज एट होम, शी हैड टू पास अ टाइम, सो शी स्टार्टेड कुकिंग एंड शी कुक्स कॉन्टिनेंटल. या एक्सपेरिमेंट ही हो रहा था. शी मेक्स वेरी गुड फूड, सो वी वर वेरी वेरी फॉर्चुनेट. तो वो होता ना, हर एक नेगेटिव की चीज़ एक पॉजिटिव होती है, तो मेरे लिए तो वो बड़ा अच्छा था यार. बट टचवुड फॉर यू इट वाज अ पॉजिटिव थिंग, क्योंकि गॉन गेम के बाद गेम चेंज हुआ. We saw you doing more OTT shows, and that too with your superstar co-star जो आपकी जोड़ी माधुरी के साथ. जो फेम गेम एक्चुअली वी स्टार्टेड, जो फेम गेम का था वो हमने लॉकडाउन के पहले एक्चुअली शुरू की. We had started shooting right in the beginning of March 2020. There was a huge set put up at the Reliance studio, and we shot for 5-6 days, and then the lockdown happened. हमने set खड़ा रखा, लगा 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 1 महीने में ख़त्म होगा. 3 महीने तक वो set रखा. And hats off to Dharma that they could hold on to the set for so long. Then finally लगा कि यार ये तो end ही नहीं हो रहा है, so we broke the set and everything. And then Fame Game, then we started shooting in November when lockdown had eased down, that whole वो जो COVID का finally people realize life has to go on. Correct. घर पे बैठ के कुछ नहीं होगा, लोग भूख से मर जाएंगे, काम तो करना ही पड़ेगा. So November then we started. So Fame Game I had actually started before Gone Game. But again, watching you both back together, it was magical. It was magical. It was always, and she's such a wonderful actor to work with. I'd done Raja with her in 95, and then I did Mohabbat in 97, and 2022 we had, after 25 years, we had Fame Game. So yeah, I was very very fortunate that I've been in such wonderful besides the success of the show and Raja, correct, to work with such a good human being, fantastic artist, we all know that, but such a pleasure to work with such a grounded person. But जब डिले हो रहा था तभी प्रेम की याद आ गई. डिले तो नहीं हो रहा था उस वक्त. आदत हो गई थी कि नहीं, आदत की बात नहीं, बट वो डिले तो हुआ नहीं था, बिकॉज दैट टाइम इट वाज के कोविड में सब घर पे बैठे हुए थे, तो इट वाज, यू हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग. यू कांट बी थिंकिंग कि ये डिले हो रही है चीज़, हर चीज़ पॉज में थी. तो चाहे वो everything was in a pause. Like we were still fortunate कि we were still little active on social media. We could still do something on social media. There were people who were sitting at home doing nothing. I did a full TV for Gone Game I did during lockdown. So I was very fortunate. So I'm a very practical and patient person. So I never had any frustrations और मुझे ऐसे लग रहा था ये क्या हो रहा है यार. लेकिन संजय, बहुत कम लोगों को पता है कि आपने एक से बढ़कर एक डायरेक्टरों के साथ काम किया है. शेखर कपूर से ले सतीश कौशिक, एन चंद्रा सर, आई थिंक राज कंवर, देन उसके बाद में द साउथ डायरेक्टर्स वे देयर, अगत्य नाइट, सिर्फ तुम, देन आई स्पोक विद जोया, साथ है दिवाकर है, जेपी दत्ता, द लिस्ट इज ह्यूज. आज जब मुड़ के देखते तो कैसा लगता है? नो, आई थिंक सो. मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ. मैंने जैसे आपने कहा, यू टुक ऑल दीज names of the directors that I worked with. You forgot Indra Kumar's name, who gave the biggest hit for me, Raja. K. Raghavendra Rao. Yeah, K. Raghavendra Rao. I did Mere Sapno Ki Rani with him. So yes, I've been very fortunate that I worked with some great actors, great directors, and I'm still working with some wonderful talent. Now this Gone Game hi le lo, I worked with Nikhil Bhatt, who was the kind of thing to do it without meeting actors and everything. It was an exceptional work that he did. Of course. And Abhishek, he got into this, he's done a fantastic job. I recently did Fame Game, which Shri Rao was the creator of the show, but I got this opportunity to work with Bijoy Nambiar and Karishma Kohli, who are such
wonderful directors. Now, one of my projects, two projects that are coming, I'm working with Ali Abbas Wow. for Bloody Daddy. Very, very fortunate to get the chance to work with him. Then I'm working with Sri Ram Raghavan in Merry Christmas, Wow, whose work I, goosebumps. yeah, I love. So, yeah, so God's been kind, and yeah, to get such fantastic directors, you अभी के अपने लाइफ में होता है कि एक दो डायरेक्टर मिल जाए आदमी होता है. Actually, So I've been, yeah, and I'm still getting, such these opportunities to work with Ali and Sriram. So, matlab it's, matlab, yeah, I can't, I don't know how to express it. also संजय आपके लाइफ में बहुत ही ग्राफ जो आपका रहा है, हाईज एंड लोज, बहुत हाई एंड लोज रहे. यू हैड Absolutely. ह्यूज हिट लाइक राजा, उसके बाद में अगेन थोड़ा सा लो फेज आ रहा है. सिर्फ तुम अ वेरी बिग, बिकॉज जो बजट पे फिल्म बनी थी, हाँ, it and I was a huge remember hit, huge Eros पे it success. was a huge hit that Yeah, movie. उसके बाद अगेन थोड़ा लो, अगेन विद कयामत यू बाउंस बैक एंड अ बैड एज गाय, एवरीबॉडी वाज लाइक अरे ये सरप्राइज है. तो वो अप एंड डाउन इतना, व्हाट केप्ट यू गोइंग उस जो लो फेज में? The thing is, see, hurdles are there in everybody's life. Everybody's journey is not just, there are very few people who had. हाई, मतलब इतना हाई कि लोग Yeah, you have to keep on going. You have to believe in yourself. When you're on a high, you shouldn't take it seriously. And when you're low, you shouldn't feel so bad also, because you know that you were part of success. It's a matter of time. You shouldn't give up your your enthusiasm. You have to keep on trying. There was a phase when Lust Stories happened for जी. 3-4 years. I didn't even face a camera because I was not happy with what I was getting. I got into production. And because I had not given up, I had kept myself ready to go when I get the opportunity, mentally and physically. So when I got the opportunity, I just मौका हाथ में लिया, बोलते ना, मौके पे चौका मार दिया, और क्या, लव स्टोरीज हो गई फिर उसके बाद यार. And आपके साथ साथ your wife also debuted on OTT. Now Touchwood, your daughter is coming. So आज क्या उन्हें how happy you are, and कोई advice दे रहे हैं आप कि क्या? Advice, so, matlab, see, the thing is that they've seen my career, so the only thing I feel that they know that you should, I always say that nothing, you should never take success for granted, or you shouldn't feel down when the failure happens, because this is part of life. We all go through, you take anybody, without taking names, everybody has gone through their highs and lows in life. And you have to see, I've seen my glass is always half full. So I hope they get all the success. Shanaya was not even started, but Mahib started with a bang. Yeah. Bollywood Wives was a huge success. Yeah. So You were also part of it. Part of it. Now season 2 is coming in September. So yeah, so I just pray to God that they get great success. Yeah. Wow. We wish you all the success. Thank you.